और एक और अहम खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया। चीन से लगातार बातचीत जारी है, फौजी सिफारती सतह पर बातचीत जारी है, दहशतगर्दी को सरहद पार से हिमायत है। आर्मी चीफ का साफ तौर पर कहना है, उत्तरी सरहद पर हालात काबू में है, फौज किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। और इस वक्त आर्मी चीफ मनोज पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करें, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तरीके का अभी तक आपने रेस्पॉन्स देखा है, कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं? दूसरा, प्रधानमंत्री भी उनको एड्रेस करने वाले हैं, वो कब एड्रेस करेंगे? और एक सवाल अलग सा है, जोशीमठ में जिस तरीके की स्थितियां अभी बनी हुई है, वहां पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, पूरा एरिया अब खतरे में है और वो पैच इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना तक, एलएसी तक वो जाता है, इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है। तो क्या इसके बगल में भी या किसी तरीके के कोई वैकल्पिक रास्ते का भी आप प्लान कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर तो वहां तक पहुंचने के लिए, एलएसी तक अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत रखने के लिए क्या कोई कंटिजेंसी प्लान भी आप लोगों ने तैयार किया हुआ है? सर ओके सर, आई एम शिवानी शर्मा, दिस साइड सर. I'm Shivani Sharma from Times Now Navbharat. My question pertains to the women in the army. You right now announced that soon women will be commissioned into the artillery. Is there a timeline or in what numbers these women will be inducted into the artillery? And is this limited to the officers only, or there are some plans for other ranks, women to be included in combat roles? Thank you. Snesh. Hi sir, Snehish here from the print. So if you could give us an update on the optimization and the restructuring plans of under you. You know, we talk about right sizing the army. What is the right size that you look at, sir? What are the numbers that we're looking at? Right. So मैं पहला सवाल संदीप ने जो पूछा था अग्निपथ के बारे में, तो जो शुरू का जो प्रतिसाद या जो रिस्पांस रहा है, मैं कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा है। और जितने भी पहले बैच में अग्निवीर हमारे रेजिमेंटल सेंटर्स में जिनकी ट्रेनिंग 1 तारीख से शुरू हुई है, ओवरऑल उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, यदि मैं कहना चाहूँगा फिजिकल फिटनेस या कीननेस, इन सभी मापदंडों पर और अन्य मापदंडों पर मेरा असेसमेंट यही है कि रिस्पांस हैज़ बीन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। आपने जोशीमठ के बारे में पूछा कि इसमें इसका क्या असर है। आपने ये भी बताया वहाँ पर हमारे एक फॉर्मेशन हेडक्वार्टर है, कई यूनिट्स भी है। जहाँ तक उसका क्या असर हमारे आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट पर पड़ा है, तकरीबन 25 से 28 वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ तरह से माइनर क्रैक्स पाई गई है, जिसके फलस्वरूप हमने वहाँ के इन यूनिट्स को या जवानों को कहीं टेम्पररीली रीलोकेट किया है। यदि ज़रूरत पड़ी तो उनको और भी ऊपर परमानेंटली लोकेट करने का भी प्लान है, जो कि औली एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, आप लोगों से किसी को ज्ञात होगा। जहाँ तक आपने रोड के बारे में पूछा, मेरी जानकारी के मुताबिक जो रोड है अभी जोशीमठ से आगे होते हुए जो माना जाती है, उसमें अभी फ़िलहाल सिर्फ कोई माइनर डैमेजेस, क्रैक्स वगैरह पाए गए हैं, जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन उनको रिपेयर करने में सफल हुआ है या उस पर काम जारी है। जो बाईपास का रोड है, मेरी जानकारी के मुताबिक उस पर कुछ समय के लिए शायद वह काम या उसको टेम्पररी हॉल्ट किया गया है। पर ओवरऑल यदि आप ये पूछेंगे कि क्या इससे हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, क्या इससे हमारी एक्सेसिबिलिटी टू द फॉरवर्ड एरियाज, क्या उस पर कोई विपरीत इफेक्ट हुआ है, तो मेरा कहना है कि उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें जो हमारी मेन एक्सिस है जोशीमठ से आगे बढ़ती हुई, उसको कोई मेजर डैमेज या ऐसी कोई उस पर इम्पैक्ट या असर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस पर कोई असर हो। जहाँ तक सेना का वहाँ के लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को सहायता देने का सवाल है, वहाँ पर जो हमारा एक हॉस्पिटल है, कुछ हेलीपैड है,
और अन्य फैसिलिटीज़ है, उसमें से कोई शेल्टर्स भी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफर किए हैं, यदि वो चाहिए तो कोई लोगों को वहाँ पर रिलोकेट कर सके। तो ओवरऑल जोशीमठ की जो सिचुएशन, उसके बारे में मेरा आंकलन इस तरह का है। एंड आई थिंक द सेकेंड वाज ऑन women in the army, which I think Shivani asked. I mentioned in my opening remarks that the women in the army have performed exceedingly well, given an excellent account of themselves. You would recently have also known that one of our women officers is now got deployed at the Siachen Glacier. You have a women contingent comprising about 25 women, which we have now deployed for a UN assignment. We have about 6 meritorious sportswomen who we have now recruited, and we are training them for greater laurels in their respective fields. You are aware of the permanent commission that we are going to grant to the women officers, which will then prepare them for certain more or major leadership roles in terms of command of various establishment and units. And those who have been granted permanent commission, we are now training them in other professional courses so that they are then eligible for selection for their future responsibilities. So this is in overall in terms of how we look at the women and their employment and performance in the army. And aligned to this, the step that I mentioned, which we have decided to induct women in the artillery, which itself is significant because we believe that they will be able to not only measure up but perform well in all the duties and appointments that we are able to give them. Last was, I think, by Snehesh, in terms of optimization, restructuring and right sizing. I'll give you a little background. This has been something which has been under consideration for some time. You are aware of the committee of experts under General Shekatkar. They had made some recommendations, total of 143, out of which 96 were approved by the ministry, out of which 86 pertain to the army. And out of 86, 58 recommendations have been implemented in full, and for the rest, we are in the process of implementing them. The main aim of this entire exercise to restructure and optimize is to enhance the operational efficiency, make our organizations more lean, agile, more responsive, and then leverage the infusion of technology, make the force less manpower intensive. So we are looking at, besides all this, areas where we are resorting to outsourcing in certain non-core activities. If I were to give you some examples, animal transport, which we felt we have better solutions available.